हाय, आप सभी लोगों को हमारी मॉर्निंग और इवनिंग की योगा क्लासेस ज्वाइन करके कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट आफ्टर ज्वाइनिंग आवर मॉर्निंग एंड इवनिंग योगा क्लासेस? Yoga batches are doing very well, but some of you are may not be able to join. The reason behind, you are not able to join the Zoom link or the Google Meet, and sometimes you are not savvy of joining at a particular time slot. You might be doing the puja, or you might be busy in some work, or you might be sleeping. So if you are really feeling these type of problems, then I am here just giving you a small video clips to join our yoga classes. By this, you can do the practice by your own, or after practicing, you are become more confident to join our daily regular classes, right? So today, I am starting with the beginners only, those have not done at all, or because of some age reason, or because of some illness, they are not able to stand up, they are not able to move, so they can start their things, right? Or they might be busy, like young generations I'm seeing, they're too much busy and they're not able to do the exercises. So today I'm just sharing 10 to 15 minutes of slots so that you can do by doing your work at your home, as you are nowadays doing, or sometimes those not able to do the exercises, they can do on the sitting on the chair, or maybe in the standing position. Some of them I am going to show you in the sitting position, some by the standing position. तो जो लोग रेगुलरली क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज उन्हें ज्वाइन करना नहीं आता, या जूम से या गूगल मीट से उन्हें ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए हम छोटी छोटी सी क्लिप्स लेकर आएंगे रिकॉर्डिंग करके, जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे या हम आपके व्हाट्सएप पे आपको शेयर करेंगे. आप सिर्फ उस लिंक को दबाइएगा और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिएगा. तो आज से हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की. जो लोग बिल्कुल भी कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे, या फिर जो लोग बैठे हुए कर पाते हैं, या फिर जो लोग कुछ बीमार हैं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वो लोग कैसे करें? चेयर पर बैठकर या खड़े होकर या दीवार का सहारा लेकर. तो शुरू करें दोस्तों. सो आर यू रेडी? आप तैयार हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम चेयर पे ऑफिस में भी बैठे हुए हैं या वर्क फ्रॉम होम आजकल चलता ही रहता है, तो हमारी बॉडी बहुत स्टिफ हो जाती है. तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमारी जो स्पाइन है वो सीधी होनी चाहिए. रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों होगी? क्योंकि रीढ़ की हड्डी यदि आपकी सीधी है तो इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी से जो हमारी एनर्जी चैनलाइज हो रही है वो प्रॉपर होगी. इन नाड़ियों के बारे में मैं अगले सेशन में आपसे बात करूंगी, लेकिन आज सिर्फ स्ट्रेट रहने का एक रीजन बता रही हूँ. कैसे इसको चेक करेंगे? आप सीधे बैठे हैं, अपने साइड में दोनों हाथों को चेयर पे रखिए और देखिए आप अपने हिप्स के बराबर अगर है तो यानी कि आपकी स्पाइन सीधी है. हो सकता है आप इस तरह से बैठते हैं तो देखिए आपके हाथ नीचे गए, तो आपने वापस अपने हाथ अपनी चेयर के बगल में रखे और सीधा हो गए. है ना इजी सा? तो जब भी आप काम कर रहे हैं बीच बीच में अपने हाथों को साइड में रख के चेक कीजिए कि आपकी स्पाइन सीधी है या नहीं. नंबर 1. नंबर 2 कि हमारी जो नीज है वो हमारे हिप्स के अलाइन होनी चाहिए या थोड़े से ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए. इससे आपके हिप्स पर प्रेशर नहीं आता है और आपको हेल्दी फील रहेगा. कभी भी आपके पेल्विक बोन में पेन नहीं आएगा. दिस वाज द सेकंड टिप. Now we will start small movements starting from the head to knee or maybe toe. Today I will try to complete. So what we will do from the head, just take your fingers, keep on your head, just you can press it like this. धीरे धीरे अपनी उंगलियों से दबाएंगे, पीछे आगे चारों तरफ, राइट. आप इस तरह से भी थोड़ा सा सिर को हल्की सी मसाज दे सकते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ. बहुत अच्छा लगेगा आपको. आपको चश्मे की जरूरत नहीं है तो आप अपना चश्मा उतार के रख सकते हैं, तो आपको करने में और भी आसानी होगी. आंख बंद करके करेंगे, जब सीख जाएंगे तो और रिलैक्सिंग फील होगा. ओके, तो दिस वाज द हेड मसाज. अब हम अपने माथे या फोरहेड को थोड़ी सी मसाज दे लेते हैं फिंगर्स से. ये स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाएगी. फिंगर्स के साथ साइड में, कई बार देखा है ना, काम करते करते या बहुत कंप्यूटर पे काम करते हुए या ऐसे भी कभी कभी हमारी इस जगह पे दर्द होने लगता है. तो अगर हम इसको रोज हल्की सी मसाज देंगे तो हमारा माथा भी खुश और हम भी खुश. देन आईब्रोज,
आईब्रोज को अपनी दोनों उंगलियों और अंगूठी से पकड़े और थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करें. Just press your eyebrows with your fingers. It will give great relaxation to your eyes. And now just slide your thumb slowly. And just press your fountain again with your thumb. It is good? Yes? Right. Then with your thumb, just press your eyes and the circular motion just move 3 to 5 times. Then with both the fingers below the eyes massage कर लेते हैं 3 times. तो अभी हमने हेड मसाज और अब हम फेस मसाज दे रहे हैं. इस तरीके से क्या होगा, हमारे जो लिम्फ नोड्स में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं वो रिलीज हो जाएंगे. नाउ मसाज ऑन योर नोज. अपनी नाक को मसाज करें. बाय दिस यू आर रिलीजिंग योर all the toxins collected in your lymph nodes. Lymphocytes release होते हैं. Then your both the fingers just below the nose. This is also pressure point to release your sinus. जुखाम, खांसी, cold, cough may be released with this. Right, great. Now we will pick your earlobes. Just खींचिए सारे कानों को ऊपर नीचे की तरफ, बाहर की तरफ एंड ऊपर की तरफ. तो दोनों हाथों से कानों को पकड़ेंगे और सर्कल. ईयर मसाज. जस्ट स्ट्रेच योर ईयरलोब्स डाउनवर्ड, साइडवर्ड एंड अपवर्ड एंड देन द सर्कुलर मोशन. डू यू रिमेंबर व्हाइल यू वर स्मॉल एंड योर टीचर अलाउ यू टू डू दिस punishment? What was that? Just to improve your memory. Yes. तो by the age हम लोगों की मेमोरी कम होने लगती है, तो याददाश्त बढ़ाने का दिस इज वेरी गुड methodology. Just remember your teachers. Okay. Then we will just put one finger, your index and thumb to the jawline and just slide like this. Very nice. Both the fingers below the earlobe, behind the earlobe rather, कान के पीछे उंगलियों को रखें और प्रेस करें. शुरू में हो सकता है आपको यहाँ दर्द भी हो सकता है. इसका मतलब आपके यहाँ पर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं. सो जस्ट रिलीज दोस टॉक्सिन्स. रिलैक्स. हाथों को घुटनों पर रखें आराम से. नाउ वी विल डू द नेक रोटेशन. सांस लेते हुए पीछे जाएं, सांस छोड़ते हुए आगे. Breathe in, take your neck behind. Breathe out, touch your chin to your neck. Do it 3 to 5 times. 3 से 5 बार करें. सांस लें, सांस छोड़ें. Breathe in, breathe out. One more time, breathe in, breathe out. एंड सेंटर में रिलैक्स. साइड टर्निंग. फेस सामने ही रहेगा. कान को कंधे से टच करने का प्रयास. धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड. सांस लेते हुए वापस. ब्रीद इन, टच योर ईयर टू द शोल्डर. ब्रीद आउट, अपोजिट साइड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वन मोर टाइम. Side twisting of your neck and relax. Now turn your face toward the right side and try to see behind. Center and opposite side, left side. Just do it slowly and slowly. Breathe out, come to the center. Slowly do it again. Breathe in, center. Keep on doing 3 to 5 times. It will release all the stress in your neck. Center. Then touch your chin to your neck. Slowly
Take a round circle clockwise. Breathe in and breathe out. Center. Slowly, slowly do it. And you can keep your eyes open. Breathe in, back side. Breathe out, coming to front side. 5 times. Opposite. Anti-clockwise. Center. It's 4 type of our neck rotation. So it will give you relaxation. Any pain, any stiffness in your neck, slowly it will reduce. And if you are having hump or thick of your neck, it will give you cylindrical, pure, slim neck. Okay? Okay. Now we will do the shoulder rotations. Touch your fingers to the shoulder, knee to the front side. Breathe out, breathe in, breathe out. Sidewise, in, out, in, out, in, out, in, out, upward, out, in, out, in, out, in, out, in, out. Then do the rotation of your elbows. Continue touching your shoulders. Try to touch your elbows in front. If you are not able to do it, just leave it like this only. Slowly, slowly. Take your elbows towards the roof, then circle back side. Very slowly. 3 to 5 rounds. This will give you shoulders strengthening as well as any type of stiffness. It will going to be reduced slowly, slowly. So all the exercises today we are doing, we need to continue at least for a week. Then next week I will give you some more exercises. And by the time you will learn all these exercises, so it will not take much time, more than 10 minutes. Yes? And relax. So this will give you the strengthening of your shoulders. But you can do one more thing. You can just hold your chair from the sidewise and keep your hand up and then bend to the other side. And then opposite like this. This will also open up your shoulders. Very good. Slowly, slowly you can do it. These all the exercises can be done while you are standing. It will easy to do it. Okay? Or you can do continue in the sitting position. One more sitting position I am just telling you. You can do all in the sitting position. Rest I am doing on the standing position. When you get the stiffness in your back, what you can do? You just hold your chair like this and twist like this. Come again, opposite side. Or if you can do or little more, then you come little bit front of your chair, then twist completely like this. Hold your both hands back side of your chair like this. So all the stiffness go, right? So you can continue on this chair. I am just doing little bit more exercises while standing position. Okay, so you can do like this, or now I am doing some of the stretches. Put your right, both the hands along with your hips. Stand in the Tadasana. This is called standing pose or Sthiti. What we can do, just hold your right hand upwards. Stretch your right hand up, left hand down. And stretch, 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 stretch as much as you can. Keep on stretching. जितना आपसे होता है उतना आप कीजिए. Slowly you can see your right finger. Come back, breathe in and relax.
Opposite hand. Stretch your hand, left hand up, right hand downwards. Stretch, 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 stretch. Little bit more. See your left hand fingers. Keep standing in the same position. Keep on breathing in and out and stretching. Slowly breathe in and relax. I'm repeating one more time. So now you can do it with me together. Right hand up. Stretch your left hand down. Right hand up. See the right hand finger. Stretch, stretch, stretch. Relax. Opposite hand. Stretch your left hand. Right hand downward. See your left hand fingers. Slowly, slowly come back and relax. Good. Now we can clench your fingers, both the hands. Keep it upward and stretch. Whatever you can do, just remind yourself that your elbows should be straight as much as you can. Don't force yourself. Just little bit more effort. That is more than enough. Yeah? Stretch your body up, 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 up. Then if possible, you can come on your toes. Fix your gaze somewhere 45 degree or 60 degree. Hold the position. If you are not able to do it, don't do it. Just stretch your body upward. Then slowly come down. Relax. Now we will do some of the waist exercises. Keep your feet apart the shoulder length. अपने shoulders के बराबर अपने पैरों को रखें. थोड़ी दूरी बना लें. थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं अगर आपको करना है. Whatever you are comfortable. It is all up to you. Then right, left, right, left, right, left. Just see, I'm keeping my body straight. Just twisting my back. Okay? Body is not coming like this or this. Okay? Body should be like straight. Then up, front, back, front, back, front, back. What I'm doing here? Like I'm doing like squeezing, then back, squeezing, and then back, squeezing, then back, squeezing, then back. What it will give you? Good strength on your lower back. Most of the time, while sitting or at the age, while we are aging, we are having pain in our lower backs, right? Then we will do the round rotation. 3 to 5 times clockwise and 3 to 5 times anti-clockwise. Yes, so back rotation also done. Then we will do little bit of knee. Put your hands on your knees. You can just feel the patella movement and just 3 to 5 times round rotation. If you are not able to do, you can hold your chair also. Okay, it is easy. If you are somewhere nearby to wall, then you can hold your wall. And now we will do the hip movement from the legs. How? Front and back, front and back, front and back, front and back. In, out. Breathe in, out. 3 counts, 5 counts or 10 counts, whatever comfortable. Just do it whatever is comfortable for you. Don't push lot. Opposite side. Or this you can do with your chair as well. Okay. Like with the chair, I am just showing you. Chair should be sturdy, huh? Keep in mind. Like this. Like this. If chair is not comfortable, then don't do it because if it may topple down. So chair should be strong enough to hold your body. Okay. Right. What else? What we can do with the knees? We can do it like just hold your knee like this and movement of your knee. 3 to 5 counts. The opposite. Nice. It's easy, right? It's easy. Or we can just throw our knees. Kick, kick, kick. Then movements of your ankle. Up and down, up and down, up and down. Then circle.
circle. You can just squeeze your fingers like this. Squeeze, 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 and relax. Squeeze, 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 and relax. While squeezing, you can release your pain. Then up and down with the left leg. Circle clockwise. Then anti-clockwise. Squeeze and relax. Squeeze and relax. Squeeze and relax. Oh, wow. Relax. We can just shake, shake, shake your body, shake your body, shake your body. By shaking your body, you will feel easy, huh? Ha 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 ha. What we can do? We can laugh, yeah. सांस लीजिए. Take your breathe in. Ha ha ha. Breathe in and exhale with the ha sound. So it will release all your stress. And you can just shake like this. Yes. Enjoy. Now what you can do? You can sit or you can lie down on your bed or on yoga mat, wherever you like. Or if you don't want to lie down, you are doing work, then just for a while, just be with yourself in a silence. And it will be like complete 10 to 15 minutes. I think it's not much time I took. It's around, if we will start completely, then it will be around 15 minutes. Then just sit like that. Take a few breaths in and out. Continue breathing. Every incoming breath, energizing your body. Every exhalation, releasing all the toxins and relaxing your body. Take your attention to the foot. अपना ध्यान पैर की उंगलियों तक ले जाएं. एड़ी, ankle, knee, right thigh, left foot, left ankle, left knee, left thigh, whole of your left leg, and whole of your right leg. Genitals, abdomen, your stomach, chest, right shoulder and right hand, left shoulder and left hand, neck, face, head, whole body.
Breathing in and out. Relax. Be aware of your surroundings. Every inhalation gives you energy and relax. Every breath gives you relaxation. Exhale. Continue breathing in and out. Keep your eyes closed. Just be aware of every sound and relax. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Let's pray for the universe. सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने आप को, अपने परिवारजनों को आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? एकदम बढ़िया, एनर्जाइजिंग, फीलिंग गुड ना? देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि हम लोग रोज इस तरीके से अगर 30 मिनट्स अपने आप के लिए निकाल पाते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा सा जो हमारा है प्रोग्राम, इससे आप प्रैक्टिस करते हुए आप स्ट्रेंथन बन पाएंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे और इस तरह से धीरे धीरे आपकी बॉडी के साथ में जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होने लग जाएंगी। आप ठीक महसूस करेंगे, आपकी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी, आप सबके साथ उठ बैठ पाएंगे। तो क्या इतना समय हम रोज निकाल सकते हैं ना? थोड़ी देर एक साथ बैठिए और जानिए कि हम कैसे कैसे एक्सरसाइजेस करते हैं। सिर्फ 30 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं देना है हमको, बस हम करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। नमस्कार, फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ग्रेट डे। एंड जो भी आपके सवाल हो अपनी बीमारी से रिलेटेड या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, थैंक यू, बाय बाय।